Assalamu alaikum. Welcome to grade 10 biology class. Today we will discuss chapter number 10 gaseous exchange with this topic gaseous exchange in plants. This topic is mentioned in your book on page 2 and 3. Before starting today's topic, we must know the answer of this question. Do plants have lungs or do they respire? So the answer is plants have no organs or system for the exchange of gases with their environment. So if they do not have any lungs, how do they respire? Actually, every cell of the plant body exchanges gases with the environment by its own. What is the meaning of this? That every cell of the plant is directly in contact with their environment. यानी अगर प्लांट्स के अंदर कोई प्रॉपर ऑर्गन्स यानी लंग्स और दूसरे रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं तो पौधा कैसे सांस लेता है? पौधे में सांस लेने के अमल के लिए प्रॉपर सिस्टम मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो एनवायरनमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल यानी रिलीज़ और ऑक्सीजन को इनहेल करता है। क्योंकि प्लांट का हर सेल अपने माहौल से डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, यानी वो अपनी मतलूबा गैसेस खुद ही एनवायरनमेंट से ले भी लेता है और एनवायरनमेंट को वापस भी कर देता है। There are different methods of gaseous exchange in plants. Here we are discussing some of the methods starting from the very first gaseous exchange to stomata. Now before this we must know that the leaves and the young stems have stomata in their epidermis. The gaseous exchange occurs through these stomata. What are stomata? Stomata are basically the microscopic pores which are present in the epidermis of leaves and young stems. So this is the layer of epidermis. What is it? It is a layer of epidermis in plant. In some of the cells, there are some spores or small microscopic pores or openings are present in this manner. The pores which are present and protected by guard cells are basically called stomata. These stomata basically responsible for the gaseous exchange in stem and leaves. They allow air to pass through them. That is, they need oxygen, and this oxygen get inside the plant through these pores. And after different activities inside the plant cell, the carbon dioxide gas is released from the plant cells into the atmosphere, into the environment. So this gaseous exchange process occurs through stomata, especially in stem, young stem and leaves. And what is the exact position of these stomata? They are present in epidermis of young stem and leaves. In this figure you can see the gaseous exchange in a leaf. Here you can see the cuticle, which is the outer thick waxy surface present over the upper epidermis. There is also a lower epidermis in the leaf, which is present all over here below the surface of leaf. This lower epidermis contains some guard cells and a pore, which is basically the microscopic pore present in the lower epidermis. This pore is called stomata. So here I am mentioning what is this pore? This pore is called stomata. Stomata are protected by the guard cells. These are the guard cells present
around the stomata. Now what happens during the gaseous exchange in leaf? Inner cells of the leaf, which are called mesophyll cells. In the similar manner, air spaces, which you can see here, these are the empty spaces or intercellular spaces among leaf cells. So both of these cells or air spaces, mesophyll cells and the air spaces, provide the large surface area for the gaseous exchange inside the plant. And what happens during this? That air, which air? That is carbon dioxide, leaves the plant cells into the environment, while air, that is oxygen, enter into the plant cell first of all in this air space, and then it moves to different cells for respiration or for gaseous exchange. So basically the gaseous exchange occurs in stomata. Now in young stems and leaves, gaseous exchange also occurs through cuticle. As I told you earlier, that the cuticle is basically the outer thick waxy layer which is actually protecting the epidermis. So this is the layer of epidermis. So above this layer, thick, so I am making it thick, waxy layer which is involved not only for the protection of epidermis, but also this thick layer is responsible for the gaseous exchange. And this sort of gaseous exchange normally occurs in young stems and leaves. So this is another method for the gaseous exchange through cuticle. Now I am going to explain you the gaseous exchange through stomata. Basically, to explain this phenomena through stomata, we must know that leaf cells face two situations. One situation they are facing during daytime and other situation during night. What actually happens during daytime? First of all, when the mesophyll cells, which are the mesophyll cells? These are mesophyll cells present in the leaves, and they contain chloroplasts in them. These dotted structures which I have mentioned over here are called chloroplasts. And you know very well, the chloroplasts are those cell organelles which are responsible for photosynthesis. So mesophyll cells carry out photosynthesis and side by side respiration as well. So oxygen is produced during photosynthesis. What is happening? Which process is taking place inside the chloroplast? Photosynthesis. Now what is photosynthesis? It is the food making process inside the plant in which the glucose is produced by the combination or by the reaction of carbon dioxide and water. So for this purpose, plant need carbon dioxide as well as release oxygen during photosynthesis. So what is happening actually? Both processes, photosynthesis and respiration, are occurring inside the mesophyll cell side by side, and oxygen is produced during this process, which is ultimately utilized in the cellular respiration. Similarly, the carbon dioxide produced during respiration is utilized in photosynthesis. So this is the combination of two types of phenomena which are taking place side by side. Is it clear to you? What is actually happened that कि mesophyll cells के अंदर क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन ये होता है कि फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं. अब दिन के बाद, चूँकि दिन का वक्त क्या है, जब प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ जो आपकी मौजूद होती है
यानी सनलाइट मौजूद होती है। सूरज की रोशनी जैसे ही लीफ सेल्स कैप्चर करते हैं वो क्या शुरू कर देते हैं, वो अपना फोटोसिंथेसिस का अमल शुरू कर देते हैं। इस फोटोसिंथेसिस के अमल में वो अपने मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट बनाते हैं। अब वो क्लोरोप्लास्ट का जो एक पूरा प्रोसेस है वो आप यकीनन पिछले टॉपिक्स में 9th क्लास में पढ़ चुके होंगे कि जिसमें बाकायदा तौर पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के साथ मिलती है और इसमें आपको पौधे की खुराक यानी ग्लूकोज मिलती है, अलोंग विथ आपको एक गैस मिलती है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ ऑक्सीजन, O2। अब इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपको जो ख़ास बात नज़र आ रही है वो ये है कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहे हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों गैसेस का एक्सचेंज होगा विद इनसाइड द प्लांट बॉडी, वेयर इनसाइड द मेसोफिल सेल्स फर्स्ट। क्योंकि ना सिर्फ ये कि मेसोफिल सेल्स सांस लेने का अमल कर रहे हैं बल्कि साथ साथ खुराक बनाने का काम भी कर रहे हैं। लिहाजा उन्हें क्या चीज़ चाहिए, उन्हें एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड का जो एरो है वो अंदर की तरफ मैंने ऐसे मेंशन कर दिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से कहाँ जा रही है, मेसोफिल सेल्स के अंदर। और मेसोफिल सेल्स में अब कौन सा प्रोसेस हो रहा है, तो मेसोफिल सेल्स में हो रहा है सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है ये, सेलुलर रिस्पायरेशन। इस सेलुलर रिस्पायरेशन के अमल में मेसोफिल सेल्स के अंदर जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है, जाहिर बात है आप रिवर्स करेंगे आप, क्योंकि सेलुलर रिस्पायरेशन हम बता चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन के नतीजे में ये टूट जाते हैं। तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है रिस्पायरेशन में, ऑक्सीजन की, साथ साथ ग्लूकोज की। तो मेसोफिल सेल के अंदर जब ये ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के अमल में प्रोड्यूस हो चुकी होती है तो वो अल्टीमेटली रिस्पायरेशन में इस्तेमाल हो जाती है। अब रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी अब एरो हेड्स आपने थोड़े से चेंज कर देना है, किसके लिए, रिस्पायरेशन के लिए। अब जो मेसोफिल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, वो क्या होगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा रिलीज कर देगा और क्या चीज़ वो इनटेक करेगा, ऑक्सीजन। तो ये हमारे एरो हेड जो हैं वो भी एक्सचेंज हो गए, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं दैट बोथ प्रोसेसेस ऑफ रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस आर टेकिंग प्लेस साइड बाय साइड, स्पेशली ड्यूरिंग डे टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग ड्यूरिंग नाइट। अब थोड़ा सा हमने प्रोसेस को अपने ईजी करके आपके सामने लाना है, क्योंकि इस वक्त हमारे रात के वक्त देयर इज़ नो सनलाइट अवेलेबल। अब सूरज की रोशनी नहीं है, देयर इज़ नो लाइट अवेलेबल फॉर द प्लांट टू कैरी आउट इट्स फोटोसिंथेसिस। तो अब पौधा क्या करेगा, पौधा ये करेगा कि अब वो सिर्फ सेलुलर रिस्पिरेशन का अमल करेगा जो उसके तमाम सेल्स के अंदर रात के वक्त हो रही है। No photosynthesis, no oxygen produced, so plant need especially oxygen through stomata inside the leaves, inside the air spaces from environment. अब ये ऑक्सीजन कहाँ जा रही है, environment से पौधे की सेल्स के अंदर जा रही है। और पौधा क्या कर रहा है, इंटर्न पौधा अपने अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहा है जो कि वो रिलीज कर रहा है अगेन थ्रू दिस स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड स्टोमेटा। इज इट क्लियर टू स्टूडेंट। ये आपका पूरा मैकेनिज्म है, पूरे एक सिचुएशन है जो कि लीव सेल फेस करते हैं। नाउ द नेक्स्ट मेथड फॉर gaseous exchange in plant is gaseous exchange through lenticels. Now, what are lenticels? Lenticels are basically certain pores. What are lenticels? These are some pores or openings, certain pores present in the layer of bark. Bark means पौधे की, दरख्तों की छाल को कहा जाता है bark. So in the layer of bark of which plants, especially
woody stem and mature roots. जो बड़े दरख्त होते हैं उनकी रूट्स यानी जड़ों में और उनके तनों यानी स्टेम में ये पाए जाने वाली एक बाग के ऊपर पाए जाने वाली कुछ स्पोर्स हैं, कुछ सुराख हैं. एंड दे आर और दैट इज impervious to gases और वाटर. यानी ये इतनी हार्ड किस्म की एक तरीके से लेयर ऑफ बाग के ऊपर पाए जाने वाले पोर्स हैं जो कि गैसेस और वाटर से इम्परवियस हैं. इम्परवियस का क्या मतलब है? अनअफेक्टेड हैं, कि इनके ऊपर गैसेस और वाटर का कोई असर नहीं होता है. नाउ द नेक्स्ट थिंग अबाउट इज फंक्शन. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ lenticels? So as you know that they are involved in gaseous exchange, so these certain pores or these pores allow air to pass through them. ये pores अपने अंदर से गैसेस को, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को गुजरने देते हैं, जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि बाकायदा तौर पर पौधे के अंदर लेंटिसल्स के ज़रिए भी गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है. इसी तरीके से गैसियस एक्सचेंज का एक और मेथड भी हम आपको इस वक्त बता रहे हैं कि गैसियस एक्सचेंज ऑल्सो अकर्स थ्रू द जनरल सरफेस ऑफ रूट्स. So gaseous exchange through general surface of root. ये हमारे पास एक और मेथड आ गया कि रूट्स के अंदर, जो कि ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं, उनमें भी गैसियस एक्सचेंज का अमल होता है. और इस तरीके कार में जिसमें गैसियस एक्सचेंज वो करते हैं या रूट्स के अंदर ये प्रोसेस होता है, इसको कहा जाता है डिफ्यूजन. सो actually the gases diffuse in and out of the general surface of the young root, and these gases, which are actually oxygen as well as carbon dioxide, are found in the soil surrounding the roots. ये किस तरीके से मौजूद होती हैं? फ़र्ज़ कीजिए कि ये आपका एक प्लांट है जिसकी जो रूट्स हैं वो डीपली सॉइल के अंदर मौजूद हैं. तो ये रूट्स जो हैं वो बाकायदा तौर पे अपने अतराफ़ में सॉइल के पार्टिकल्स रखती हैं. दीज आर द सॉइल पार्टिकल्स एंड देयर इज़ अ थिन लेयर ऑफ वाटर अराउंड देम. इसी तरह इनके अतराफ़ में पानी की भी एक बारीक सी लेयर या तय होती है. सो अगर आप पूरा एक रूट का स्ट्रक्चर अपने जहन में रखें तो रूट्स जो हैं वो पौधे का सबसे बॉटम पार्ट है, जो कि ज़मीन के अंदर यानी अंडरग्राउंड होता है. अब अंडरग्राउंड आपको पता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी जो है वो या कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती. तो इस सूरत हाल में ये भी निज़ाम कुदरत है कि अल्लाह ताला ने पौधे के लिए, इस पौधे के ख़ास तौर पे इस हिस्से यानी रूट के लिए भी एक निज़ाम रखा हुआ है जिसमें सॉइल के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं. यानी ये जो आपको पार्टिकल से नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर ये गैसेस आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मौजूद है, जो ये इंडिकेट कर रही है कि ज़मीन के अंदर भी पौधा बाकायदा सांस लेने का अमल कर रहा है, जिसमें अगर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो ऑक्सीजन अपनी अतराफ़ की एनवायरनमेंट यानी सॉइल से ले रहा है और इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहा है. Now, in the end, another method of gaseous exchange which normally occurs in aquatic plants. What are aquatic plants? Those plants which live or grow in water. Now, अब हम बात कर रहे हैं कि aquatic plants क्या हैं. aquatic plants क्या हैं? ये पानी में उगने वाले पौधे होते हैं, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर उर्दू में भी, पानी में उगने या ग्रो करने वाले पौधे. अब ये पौधे क्या करते हैं? इनको भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इन्हें भी गैसियस एक्सचेंज के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी से रिलीज़ करना होता है. तो नॉर्मली जब एक पौधा किसी भी पानी
में ग्रो करता है, तो बेसिकली उस पौधे की जो ग्रोथ होती है दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस इन द वाटर। यानी यूँ समझ लें कि अगर ये पौधा पानी में ग्रो कर रहा है तो इसको सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो एक्चुअली पानी के अंदर ही डिज़ोल्व फॉर्म में मौजूद है। यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन की कुछ मिकदार डिज़ोल्व है, हल हुई हुई है, लिहाजा पौधा इसको अपने लिए सांस लेने के अमल के लिए यूटिलाइज कर रहा है। इन रिटर्न वो क्या कर रहा है, वो अपने सांस लेने यानी सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है उसको पानी ही के अंदर रिलीज़ कर रहा है। तो ये एटमॉस्फेयर जो पानी का इस वक्त मौजूद है, यानी जो कुछ हो रहा है गैसियस एक्सचेंज का अमल वो पानी के अंदर हो रहा है, पानी से बाहर या इन्वायरमेंट में या एयर से पौधा अपने लिए कुछ भी हासिल नहीं कर रहा। So this is all about the gaseous exchange in plants that normally occurs through different method and you have seen in this lecture. Thank you so much.